Assalamualaikum students, hope you all are good. Open your English Oxford book and open your page number 74, unit number 13, The Wind in the Willows. आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है. Read the words and describe the pictures. ये हमने words पढ़ने हैं. A mole, a water rat, a badger, a pistol, footprints, a hollow in a tree. ठीक है. Okay, listen and complete the letter. अब ये जो है हमने इनको फिल करना है, ठीक है. ये लेटर है. Dear Sarah and Ali, I am so glad you are going to stay with us in Lahore in the summer holidays. What would you like to do? Would you like to go out a lot or would you like to stay at home and watch DVDs? It will be hot, so we might go out in the early mornings and in the evenings. Would you like to go to the Shalimar Gardens? They are very old and beautiful, and we might have a picnic there. Or would you like to go to Jahangir's tomb? It's very near to Badshahi Mosque and Anarkali, so we might visit them on the same day. Do write and tell me that you would like to do, and I will make some plans. Much love, Auntie Farida. ठीक है, तो ये हमने लेटर को कंप्लीट कर लिया. Now come to page number 75. ये बी एक्सरसाइज में हमने ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं. दिस इज योर होमवर्क, ठीक है. नंबर सी देखिए. लुक एट द वर्ड्स इन द ग्लॉसरी, राइट द पास्ट टेंस ऑफ ईच वर्ब एंड देन यूज देम इन द सेंटेंसेस. ठीक है, ये पास्ट वर्ड हमने यूज करने हैं. जैसे द रेन पैटर्ड ऑन द रूफ. नंबर 1, वी रश्ड टू गेट द रेन. द सन डिसअपियर्ड व्हेन नाइट फेल. द विंड विसल्ड इन द ट्रीज. द रनर डॉज्ड राउंड अ ट्री.